Hello students, this is our English trainer Manika Kaushal and today we are going to recite a poem. But before going to recite that poem, I just want to discuss with you some means of transport. So students, there are three means of transport: land, sky and water. Land transport, sky transport and water transport. These are the three means of transport. By giving you examples of these three transports, here you can see this cycle is an example of land transport, this car is an example of land transport. Here you can see this jet plane and aeroplane, they both are the examples of sky transport. And this boat is an example of water transport. So these are the different examples of transport. So here I have written this word train, Train, train. Can you please tell me what means of transport is this? Yes, of course you are right. This is an example of land transport. Well done beta. So today we are going to recite a poem, Trains. Here is a train. See, here is a train for you, and this is the track of that train. If you ask me, my favorite land transport is train. So today we are going to study about trains. Train run on this track. So here we are going to recite the poem Trains. Over the mountain, over the plains, over the rivers. Here come the trains, here come the trains, here come the trains. Over the mountains, पहाड़ियां ਨੂੰ क्रॉस करके, over the plains, मैदानी इलाका ਨੂੰ ਵੀ क्रॉस करके, over the rivers, नदियां ਨੂੰ क्रॉस करके. Here come the trains. देखो साडी ट्रेन भजी जाती है. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Carrying passenger, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Carrying passengers, सब मुसाफिरां ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ. Carrying mail, जो भी डाक पत्तर जो भी सामान है सारा ढो के. Bringing their precious loads, बहुत कीमती सामान ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के. In without fail, बिना फेल होए साडी ट्रेन छुक 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 करदी भजी जाती है. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Thousands of freight cars. ये freight cars की है कि ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ, ਸਭ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ. ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ. ਥਰੂ ਡੇ ਐਂਡ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ, ਥਰੂ ਡਸਕ ਐਂਡ ਡੌਨ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ. ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਬਸ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, here come the trains. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, here come the trains, and here come the trains. So this was the poem about trains, students, and it is composed by James S. Tippett, and hope you must have enjoyed the poem. Now what we are going to do, students, we are going to learn the difficult words of this. So students, थोड़ा होमवर्क ही है. आज ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ डिफिकल्ट वर्ड्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਈਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ. ਦ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਦੈਟ ਵਾਸ देयर ਇਨ ਦ ਪੋਮ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ? ਮਾਊਂਟੇਨਸ. ਪਹਾੜੀਆਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ. ਪਲੇਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਾਟਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ? ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? प्लेन्स. रिवर्स, नदियाँ, नदियाँ ਨੂੰ क्रॉस करके ਜਾਂਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ट्रेन 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ क्रॉस करके ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ट्रेन ਸਾਡੀ. सो रिवर्स आर नदियाँ.
पैसेंजर्स की बोलना इनू पैसेंजर्स PASSENGERS मुसाफिर जो तुसी ट्रेन या बस च बैठ के किते जांदे हो तो तुसी की हो उत्थों दे पैसेंजर्स हो मुसाफिर हो मेल कोई भी डाक पत्तर है उन्होंने की कहीदा है मेल जी ट्रेन है साड़ियाँ मेल्स भी लेके आती है प्रेशियस कीमती तोड़ा समा बहुत कीमती है बेटा इनू बाई मंथली एग्जाम्स लगाओ पढ़ो प्रेशियस PRECIOUS प्रेशियस कीमती प्रेशियस समान लैके आती है साड़ी ट्रेन लोड्स भार या वजन काफ़ी लोड लैके आती काफ़ी ज़्यादा भार या वजन उठाती है साड़ी ट्रेन फ्रेट FREIGHT फ्रेट किराया या भाड़ा या माल गड्डी जी फ्रेट कार्स ने वो साड़ियाँ माल गड्डियाँ होंदियां ने उन्होंने असीं फ्रेट कहने आ डस्क शाम या संध्या वेले के समय में बेटा डस्क क्या जाता है डॉन DAWN डॉन सवेरे या तड़के सार के समय असीं की कहने आ डॉन ए बेटा 10 वर्ड्स ने तुसी आस करती हैं मैं कि तुसी एंजॉय की होनी है पोम ते ये 10 डिफिकल्ट वर्ड्स यू हैव टू राइट एंड लर्न आल्सो सो टुमारो आई एम गोइंग टू recite this poem again and you are going to recite along with me. Thank you so much students. God bless you.